सो हे गाइस, माय नेम इज मनीष एंड मैं एक फुल स्टैक डॉटनेट डेवलपर हूँ। सो रैंडमली मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जैसे मैंने स्ट्रगल किया है कि डॉटनेट क्या था। सो एक्चुअली जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मुझे जेन्युइनली आई वाज नॉट नोइंग व्हाट इज डॉटनेट, डॉटनेट होता क्या है। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता था। दो आई हैड डिड अ बीटेक। मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर साइंस में। बट जो कर रखी है जिसने बीटेक, उन्हें पता होगा कि कॉलेज में क्या ही सिखाया जाता है, राइट। आजकल तो बच्चे लाइक पीपल आर किड्स आर गेटिंग कॉम्पिटिटिव, बट मेरे टाइम पे जब मैंने बीटेक की थी उस टाइम पे कॉलेज में कुछ नहीं था, कुछ नहीं सिखाया जा रहा था। बट आजकल के टाइम पे वो लाइक किड्स आर स्मार्ट नाउ। ओके, सो मैं आपको बताऊंगा कि डॉट नेट है क्या। डॉट नेट, व्हाट इज डॉट नेट। ऑल बहुत लोगों ने वीडियोस बनाई है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी फन मैनर। हम सीखेंगे भी, हंसेंगे भी एंड मजे भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले तो डॉट नेट समझते हैं हम, डॉट नेट है क्या। डॉट नेट लोगों को लगता था, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कि डॉट नेट एक ना विंडोज की कोई कमांड प्रॉम्प्ट की लैंग्वेज है, उधर ही होता है डॉट नेट। मुझे तो ये लगता था कि शायद वो ब्लैक सी विंडो होगी एंड उस पर हम समथिंग समथिंग टाइप करेंगे एंड वो ही डॉट नेट है। बट नहीं, डॉट नेट एक फ्रेमवर्क है, प्रॉपर राइट फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर हम एक मल्टीपल लैंग्वेज डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। सो 2011-12 के आसपास जब पीपल आर स्विचिंग टू क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन, लाइक वो एक स्कोप भी देख रहे थे कि भाई हम, अगर हमें विंडोज में एप्लीकेशन चाहिए और वही मैं चाहता हूँ वही सेम कोड मैं रन कर लूँ अपना मैक ओएस में, कैसे चलेगा। क्या मैं अलग कोड करूँ, सेम कोड करूँ विंडोज में, फिर वही सेम कोड उठा के लेके जाऊँ शिफ्ट में, फिर उसमें ही वो कोड करूँ। तो पीपल स्टार्ट started researching for how we can have a cross platform application, कि एक ही जगह कोड करूं, वही वही कंपाइल्ड कोड, बिल्ड कोड हर जगह चल जाए, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में चल जाए। सो देन Java, at that time Java was fulfilling all the requirements, so people started, although Java पहले से ही डॉट नेट से बहुत फेमस थी, तो Java में लोग और ज्यादा स्विच करने लग गए। तो डॉट नेट सिर्फ विंडो तक स्टैग्नेंट हो गया था कि भाई डॉट नेट सिर्फ विंडोज में होगा। तो पीपल, what people started doing, people started making .NET as a stagnant language, मतलब बहुत लिमिटेड स्कोप है इसका कि विंडोज तक ही सीमित है या विंडोज सर्वर्स पे ही चलेगा, राइट। सो देन माइक्रोसॉफ्ट कम अप विद .NET कोर। सो .NET कोर उन्होंने एक फंक्शनलिटी बनाई जिसके अंदर एक उसने उन्होंने क्या बनाया, कैस्ट्रो सर्वर बनाया, जिसके अंदर एप्लीकेशन होगी तो बिल्ड कैस्ट्रल में, बट वो कैस्ट्रल एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सर्वर था, जिसकी वजह से वो बिल्ड कोड जो डॉट नेट में बिल्डेड है कैसो सर्वर पे रन होगा, लेकिन वो कैसो सर्वर प्लेटफॉर्म क्रॉस 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 प्लेटफॉर्म था बेसिकली, राइट। तो वो दूसरी दूसरी क्रॉस प्लेटफॉर्म एज एन operating system, I mean Linux, Unix, right? So from there it started. So the first .NET 3 came, then .NET 3.1 came. Why they name as 3.1? Because already they were having .NET 4 framework, .NET 4.5 framework. So they come up with .NET 3, then 3.1. 3.1 was a version which were using by the people, right? 2 also came. Then .NET 5, 6, 7, 8. Now currently in market we are using 8. So what we will learn in .NET, we'll start with .NET Core, as .NET framework is not used by people now. So that is why we'll start with .NET Core. In C Sharp, we'll use programming language C Sharp. What we learn. So we will be learning how we can develop a web API project, right? कि हम डॉट नेट कोर में वेब एपीआई प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, उस वेब एपीआई को यूज करके हम एमएस कैसे बना सकते हैं, एमएस आई मीन माइक्रो सर्विस, राइट। उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट ऑथ लगाएंगे, और इट कैन बी एनीथिंग। वो ऑथ वी कैन यूज JWT, राइट।
and will deploy those set of microservice over Gate and will make that MS as a will use Docker for containerization and will use Docker images to deploy over K8. So K8 is Kubernetes basically. So it will be deployed over a container of Docker, but the container will be managed by K8, and we'll learn like how K8 manage. What are the things in K8, right? K8 is very fun to learn technology. Like there are multiple things that are very easy to learn, and that should a developer should have a knowledge of K8 at least. K8 like the developer should have knowledge of DevOps, little bit knowledge of DevOps, I believe. डेवऑप्स की नॉलेज होना आजकल के टाइम में थोड़ी बहुत जरूरी है आपको डॉकर के बारे में पता होना चाहिए दैट इज राइट एंड प्लीज माइंड मी आई एम नॉट अ गुरु राइट मैं भी अभी लर्निंग स्टेट में ही हूँ मैं भी लर्न कर रहा हूँ आप लोगों से सीखूंगा आपको सिखाऊंगा कुछ आप मुझे सिखाना सो दैट्स हाउ विल वी ग्रो एज अ कम्युनिटी राइट सो या व्हाट एल्स या इन फ्रंट राइट in front end will make an application in React, JS or Angular. But Pradhan, yaar, I love Angular as compared to React. From the starting, I was working on Angular JS, no? So the first version of Angular, I was working on that. But after that, मुझे chance नहीं मिला Angular पे काम करने के लिए इतना different company में. I am looking out for a good project in Angular. मुझे मिले कोई project हाथ खोलने के लिए तो I really love to grab. अगर आप में से किसी के पास हो तो प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी ठीक है रिएक्ट जेएस एंगुलर के ऊपर एक हम छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे ठीक है एक फॉर्म टाइप बनाएंगे राइट उस फॉर्म को एंड बैकएंड सर्विस को हम डिप्लॉय करेंगे K8 पे एंड विल यूज Azure services. What kind of service will use? We'll use Azure Service Bus, right? We will use Queue also. अब क्यू बहुत तरह की हो सकती है काफका की भी क्यू कर सकते हैं हम क्यू भी यूज करेंगे राइट we'll use storage account can be anything like we can use blob also we'll use Azure SQL also huh and yes we going to use Redis cache not in Azure I think Redis as a service in Azure also I don't know I have to check Redis cache right we'll use these kind of things and develop an application. So that was this video was mind my language, mind my English grammar, very bad at it right now. So this video is basically a introduction video. मुझे नहीं पता मैं मतलब मैं क्या कर रहा हूँ. I don't know. I felt to doing it. I'm doing it. लोग क्या बोलेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता बट ठीक है आई फेल टू डू इट मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए एंड शेयर करना चाहिए एंड लोगों का फीडबैक भी मिलेगा लाइक where I'm wrong, where I'm correct, right? That's how we learn, right? So I really want to build a network where a healthy network where we all can learn new things, right? So yeah, I hope we'll be getting new, you know, uh, new learnings from this type of mind, and we'll meet in another video, and we'll try to make new video in it. लाइक एट एवरी संडे मैं कोशिश करूंगा कि हर संडे को एक वीडियो बना के डाल सकूं यूट्यूब पे सो लेट्स सी हाउ इट गोस बाय